Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our application AIMS tutorial. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Page number 245, question number 9. P and Q are partners sharing profits and losses equally. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under. कौन कौन है पार्टनर्स? P and Q and they are sharing profit and losses equally. मतलब जो भी अमाउंट बांटना है वो आधा आधा बांटेंगे. यहाँ पे कुछ liabilities दिए हुए हैं, कुछ assets दिए हुए हैं. Provided with some additional information. On the above date, Mr. R was admitted into partnership for 2/9 share in future profits of the firm. तो पहले से पार्टनर्स P और Q है. अब नया बंदा कौन आ रहा बिजनेस में? R. That following are the terms of admission. Admission के शर्त क्या है? R should bring rupees 40,000 as capital, 16,000 as goodwill. नया बंदा अपने साथ 40,000 कैपिटल के लिए पैसे लाना, 16,000 गुडविल के लिए पैसे लाना. सो ये कैपिटल का पैसा क्या करेंगे? बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. गुडविल का पैसा क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे. फिर बांटने के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर्स. मतलब नया बंदा जो 16,000 गुडविल ला रहा, पहले तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने लोगों में बांट देंगे. पुराने लोगों में बांटने के बाद जिसको जो शेयर मिल रहा उसमें से वो लोग आधा शेयर विथड्रॉ कर रहे हैं, बाकी का आधा बिजनेस में वैसे ही रख रहे हैं. देन प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन ट्रेड डेप्टार्स. मतलब जितने भी पैसे आना है अपने को डेप्टार्स से, उस पर अपने को 5% प्रोविजन मेंटेन करना है. मतलब ये ट्रेड डेप्टार्स 40,000 आना है, जिसपे अपन 5% प्रोविजन मेंटेन करेंगे. देन बिल्डिंग्स आर टू बी वैल्यूड एट 50,000. The new profit sharing ratio of PQR would be 4:3:2 respectively. यहाँ पे P और Q का ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वली, मतलब 1/2 1/2. न्यू रेशियो क्या है? 4:3:2. तो अब जब अपने को प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम कर सकते हैं. और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब काम में आएगा? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल में काम आएगा. गिव जनरल एंट्रीज ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर. सो अपने को जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बना रहे और बैलेंस शीट बना रहे. पूरे चैप्टर्स एडमिशन रिटायरमेंट खत्म होने के बाद हम जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लेंगे. सो पहले जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या मालूम करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करेंगे. वर्किंग नोट्स का पार्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब यहाँ पे पहले पार्टनर कौन है? P. ये दोनों क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है, देयर ओल्ड शेयर विल बी 1/2 माइनस न्यू शेयर क्या दिया हुआ है? 4 + 3 7, 7 + 2 9, so it will be 4/9. Now cross multiplying it. 9 1s are 9 minus 2 4s are 8 divided by 2 9s are 18. So it is 9 minus 8, 1 divided by 18. Then for Q it is old ratio is 1/2 minus new ratio is 3/9. Then cross multiplying it, 9 1s are 9 minus 2 3s are 6 divided by 2 9s are 18. So it is 9 minus 6 3 divided by 18. So sacrificing ratio of P is to Q is 1:3. ये लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:3 है. मतलब जो भी अमाउंट बांटना है वो 1/4 3/4 में बांटेंगे. गुडविल जब बांटते हैं हम कैसा बांटेंगे? 1/4 3/4 में बांटेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, towards exchange of DR debit, towards exchange by CR credit, and the name of the account will be taken as revaluation account. The rules for revaluation are: decrease in value of asset will be recorded on debit side, increase in value of asset will be recorded on credit side, increase in value of liability will be recorded on debit side, decrease in value of liability will be recorded on credit side. Adjustments किस पे दिया हुआ है अपने को? Provide for bad debts at 5% on trade debtors. The value of trade debtors is given as 40,000, जिसमें ऑलरेडी हम 800 का प्रोविजन निकाले. तो पहले 40,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे. 10% ऑफ 40,000 इज 4,000, 5% विल बी हाफ ऑफ इट 2,000. तो 40,000 का जब आप 5% कैलकुलेट कर रहे हैं, 40,000 जो ट्रेड डेप्टार्स की वैल्यू है, इस पे अपने को 5% निकालना है. ये 2,000 है.
जिसमें हम ऑलरेडी 800 का प्रोविजन निकाले, तो और कितने का प्रोविजन निकालना बाकी रहता? 1600 का प्रोविजन निकालना बाकी रहता. Sorry, already we have taken a provision of 800, so 2000 minus 800, still we have to take out a provision of 1200 rupees. So the value of debtors is 40,000, जिसपे अपने को 5% प्रोविजन निकालना है, so it works out to be 2000, जिसमें हम ऑलरेडी 800 का प्रोविजन निकाले, तो और कितने पैसे निकालना है? 1200 रुपए निकालना है. So again we have to reduce the value of debtors by 1200, so it is decrease in value of asset. It will be recorded on debit side of revaluation account as to provision for bad debts 1200 rupees. In balance sheet it 1200 will be subtracted. किसमें से subtract करेंगे 1200? ये amount net amount 39,200 में से minus करेंगे. So trade debtors will be taken on asset side as 39,200 minus provision for bad debts 1200. 39 minus 1 38, 200 minus 200 0. It is 38,000. Then after adjustment on debtors, we have another adjustment. On buildings to be valued at 50. ऊपर buildings की value क्या दिया हुआ है? It is given as 45,000. buildings की value 45,000 दिया हुआ है, नीचे उसको 50 करो बोला. It is increase in asset, so it will be recorded on credit side as by buildings 45,000 की चीज को 50 करना है, तो 5,000 रुपए बढ़ रहे. So in balance sheet it will be shown as buildings 45,000 plus appreciation 5,000. It becomes 50,000. buildings 45,000 plus appreciation 5,000 becomes 50,000. 40 plus 5, 45 plus 5, it becomes 50,000. Then we have an adjustment new profit sharing ratio, जिसकी मदद से हम sacrificing ratio मालूम कर लिए. Now we have completed the adjustments on assets and liabilities. Now we'll be balancing revaluation account. The total on debit side is 1,200, whereas the total on credit side is 5,000. So 5,000 is more than 1,200. So on both the sides we'll be writing the total as 5,000, 5,000. Subtracting 1,200 from 5,000. 5,000 minus 1,000, 4,000. 4,000 minus 200, 3,800. So 3,800 is profit on revaluation, which will be transferred to P and Q in their old profit sharing ratio. So it will be recorded as to profit transferred to P capital account 3,800 into 1 by 2, because P and Q are sharing profit and losses equally. Q capital 3,800 into 1 by 2. So 3,800 ka half 1,900 hai. So the profit share of P is 1,900, for Q is 1,900. After revaluation account, we'll be preparing cash account. The format for which is same: date particular general folio amount rupees, date particular general folio amount rupees. Towards extreme left we'll be writing DR debit, towards extreme right we'll be writing CR credit, and the name of the account will be taken as cash account. Cash, it is an asset. It will be recorded on debit side as to balance brought down 9,800. इसका मतलब क्या? न्यू पार्टनर Q जिस दिन बिजनेस में आ रहा, उस दिन पुराने पार्टनर्स P, न्यू पार्टनर R जिस दिन बिजनेस में आ रहा, उस दिन पुराने पार्टनर्स P और Q के पास कितना पैसा है? 9,800 रुपए है. अब नया बंदा कौन आ रहा बिजनेस में? R. He is paying 40,000 as capital, 16,000 as goodwill. तो कैश के रूल्स क्या है? पैसा आ रहा डेबिट में लिखना. कौन ला रहे पैसा? R लेके आ रहा. So it will be recorded as to R capital 40,000 capital to goodwill 16,000. तो अब ये जो गुडविल है ये हम पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे. बांटने के बाद वो लोग विथड्रॉ कर रहे हैं, तब हम क्रेडिट साइड कंप्लीट करेंगे. Till now we have completed only half part of cash account, which is debit side. To balance brought down 9,800, to R capital 40,000, to goodwill 16,000. Next after this we'll be preparing goodwill account. फिर goodwill account में जो पैसा बांट रहे, बांटने के बाद विथड्रॉ करेंगे. So next we'll be preparing goodwill account. The format for which is date particulars general folio amount rupees, date particulars general folio amount rupees. Towards extreme left we'll be writing DR debit, towards extreme right we'll be writing CR credit, and the name of the account is goodwill account. How do we prepare goodwill account? Cash के account में goodwill का नाम लिखिए, goodwill के account में cash का नाम लिखेंगे. इधर डेबिट में लिखे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे. By cash 16,000. This amount of 16,000 will be now distributed among old partners P and Q in their sacrificing ratio, which we have calculated by using the formula old ratio minus new ratio, which was 1:3. So 1/4 for P, 3/4 for Q. तो अब ये जो 16,000 के 4 हिस्से करेंगे आप, तो एक हिस्सा 4,000 का आएगा. As P has only 1 share, he'll be getting 4,000. As Q has 3 shares, he'll be getting 12,000, which will be recorded here as to P capital 16,000 into 1/4 4,000, to Q capital 16,000 into 3/4 12,000, and the goodwill account will be balanced as for 16,000 16,000. 16,000 16,000. 12 plus 4 16, 16,000.
So the total on both the sides of goodwill account will be 1616. अब ये जो पैसा बांटे, गुडविल का जो 16,000 अमाउंट था, पी और क्यू को बांट दिए, तो पी को कितने मिले? 4,000 मिले, क्यू को कितने मिले? 12,000 मिले. अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा? हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओल्ड पार्टनर्स. मतलब पी को जो अमाउंट मिला उसमें से पी हाफ विथड्रॉ करेंगे, क्यू को जो अमाउंट मिला उसमें से क्यू हाफ विथड्रॉ करेंगे. सो पी गॉट 4,000, सो ही विल बी विथड्रॉइंग half of it, which will be 2,000 rupees. So by P capital 2,000 rupees. Q को कितना मिला? 12,000. Half of it will be 6,000. So Q will be withdrawing 6,000 rupees. Now we'll be balancing cash account. The total on debit side is 40 plus 10, 50, 50 plus 9, 59 plus 6, 65,800. 65,800. The total on credit side is 8,000. तो ये लोगों के पास 65,800 में से ये लोग क्या कर रहे हैं? 8,000 गुडविल के पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं. 2 is withdrawn by P and 6,000 is withdrawn by Q. तब ये लोगों के पास अवेलेबल कैश बैलेंस क्या बचता? 57,800. So the total on both the sides will be recorded as 65,800, 65,800, and from 65,800 we'll be subtracting 8,000. Then the left out amount is 57,800, which will be recorded as by balance carried down 57,800, and on opposite side it will be recorded as to balance brought down 57,800. We have completed goodwill account. After goodwill account, we need to check with two items. One is general reserves and next is profit and loss account. Only if these names are given, we'll be preparing these accounts. So in this problem, general reserves name is given on liability side 15,000. General reserves is always a liability and all liabilities have credit balance. So general reserves account will be prepared as by taking the formula date particulars general folio amount rupees, date particulars general folio amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account will be taken as general reserves account. As it is a liability, it will be shown on credit side as by balance brought down 15,000. This amount will be closed because it is the amount maintained by old partners in order to meet future contingencies. So at the time of admission of a new partner, this amount will be closed by transferring it to old partners capital P and Q in their old profit sharing ratio, which is equal 1/2, 1/2. So it will be transferred to P capital as 15,000 into 1/2, 7,500, to Q capital as 15,000 into 1/2, 7,500. And the total on both the sides of general reserves account will be 15,000, 15,000, 7,500 plus 7,500, 15,000, 15,000. Next, after general reserves account, as we do not have profit and loss account, we'll be continuing with partners capital account. If profit and loss would have been given either on liability side or on asset side, then we would have prepared profit and loss account. But profit and loss is neither given on liability side nor on asset side. So now directly we'll be preparing partners capital account, for which the format will be particulars P amount rupees, Q amount rupees, R amount rupees, particulars P amount rupees, Q amount rupees, R amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account will be partners capital account. How do we start partners capital account? By writing it as by balance brought down. So as it is a liability, all liabilities have credit balance. So here it will be recorded as P capital 50,000, Q capital 50,000. So it will be shown as by balance brought down 50,000 for P, 50,000 for Q. Next, as R is new partner, he bought in cash 40,000. So cash के अकाउंट में R कैपिटल का नाम लिखे थे, अब R कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे. कैश के डेबिट में हम टू आर कैपिटल लिखे थे, तो आर के क्रेडिट में हम बाई कैश 40,000 लिखेंगे, बाई कैश 40,000. फिर गुडविल के अकाउंट में पी और क्यू का नाम लिखे थे, पी और क्यू के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखेंगे. ही गॉट 4,000, ही गॉट 12,000. सो हियर इट विल बी शोन एज बाई गुडविल 4,000 फॉर पी, 12,000 फॉर क्यू. फिर जनरल रिजर्व बांटे थे, जनरल रिजर्व बांटे वक्त दोनों का नाम डेबिट में लिखे थे, टू पी कैपिटल 7,500, टू क्यू कैपिटल 7,500. जनरल रिजर्व के अकाउंट में पी और क्यू का नाम लिखे, तो पी और क्यू के अकाउंट में जनरल रिजर्व का नाम लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व अकाउंट 7,500 फॉर पी, 7,500 फॉर क्यू. फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांटे थे, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में पी और क्यू का नाम लिखे थे, टू पी कैपिटल 1,900, टू क्यू कैपिटल 1,900. सो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में पी और क्यू का नाम लिखे, पी और क्यू के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे. उधर डेबिट में लिखे थे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,900, 1,900. तो ये जो पैसा है, P has invested 50,000, he is getting a share of 4,000 from Goodwill, 7,500 out of old general reserves, and 1,900 from revaluation profit. So now his capital balance is 63,400, out of which he is withdrawing half of his share of Goodwill, which is 2,000 rupees, which we have recorded on credit side of cash account. क्योंकि ये लोग गुडविल में से आधा आधा अमाउंट निकाल रहे थे, तो कैश के क्रेडिट में इन दोनों का नाम लिखे थे. तो कैश के क्रेडिट में पी और क्यू का नाम लिखे, तो पी और क्यू के डेबिट में कैश का नाम लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 2,000 फॉर पी, 6,000 फॉर क्यू. क्योंकि पी को 4,000 मिले थे, जिसमें से आधा अमाउंट 2,000 विद्रॉ कर रहे, क्यू को 12,000 मिले थे, जिसमें से 6,000 विद्रॉ कर रहे. नाउ विल बी बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट.
The total on credit side of P capital account is 63,400, whereas the total on debit side is 2,000. तो दोनों में कौन सा ज्यादा है? 63,400 ज्यादा है. So on both the sides we'll be writing the total as 63,400, 63,400. Now subtracting 2,000 from 63,400. Why we are subtracting? Because he has withdrawn half of the amount of goodwill which he got as his share. So 63 minus 2, 61,400. It will be recorded as to balance carried down 61,400. The same will be recorded on opposite side as by balance brought down 61,400 for P. Now balancing Q capital account. The total on credit side of Q capital account is 71,400, whereas the total on debit side is 6,000. So दोनों में कौन सा amount ज़्यादा है? 71,400 ज़्यादा है. So on both the sides we'll be writing the total as 71,400, 71,400, out of which we'll be subtracting 6,000 as he has withdrawn half of his share of goodwill. So subtracting 6,000 from it, we are left out with an amount of 65,400, which will be recorded as to balance carried down 65,400. The same will be brought down on opposite side as by balance brought down 65,400. Then the total on credit side of R capital account is 40,000. The total on debit side of R capital is 0. So 40,000 is more than 0. So on both the sides we'll be writing the total as 40,000, 40,000. Then in order to make it equal to 40,000, we'll be writing it as to balance carried down 40,000. The same will be recorded on opposite side as by balance brought down 40,000. Now we'll be preparing new balance sheet of PQ and R as on 31st March 2020. The format for which is liabilities amount rupees, assets amount rupees. On liability side, first we'll be writing capitals. The capital balances of PQ and R are 61,400, 65,400, 40,000. So 61,400, 65,400, 40,000. Then after writing capital values, we'll be comparing other liabilities. Bills payable 10,000. इसको कुछ नहीं करे तो जैसा है वैसा बताएंगे. Bills payable 10,000. Bills payable 10,000. Then bills payable के बाद next we have creditors 25,000. इसको भी कुछ नहीं करे तो जैसा है वैसा बताएंगे. Creditors 25,000. Creditors 25,000. Then after creditors we have bank overdraft 20,000. इसको भी कुछ नहीं करे तो जैसा है वैसा बताएंगे. Bank overdraft 20,000. Then इसके बाद अपने को liabilities में क्या है? General reserves 15,000 है. इसको हम बांट के close कर दिए. So this will not be shown in balance sheet again. Now we have completed all the items which are given on liability side. Now let us have a look on asset side. Assets में cash 9,800 दिया हुआ है. But आज ये लोगों के पास कितना पैसा है? पहले नया बंदा आने से पहले ये लोगों के पास 9,800 थे. फिर नया बंदा अपने साथ 40,000 कैपिटल के पैसे ला रहा, 16,000 गुडविल के पैसे ला रहा. तो आज ये लोगों के पास कितना अमाउंट रहना? 65,800 रहना. बट उसमें से ये दोनों क्या करे? He has withdrawn 2,000 as from his share of goodwill. He has withdrawn 6,000 from his share of goodwill. तो ये पैसा चले जा रहा है. इसके बाद ये लोगों के पास क्या पैसा बच रहा? 57,800 बच रहा. So in new balance sheet we'll be showing cash balance of 57,800 rupees. Cash 57,800. Next after cash we have bills receivable 10,000. इसको कुछ नहीं करे तो जैसा है वैसा बताएंगे. Bills receivable 10,000. Then bills receivable 10,000 के बाद we have trade debtors. तो trade debtors की value 40,000 दिया हुआ है जिसमें से already 800 provision minus करे. So 39,200 बच रहा. अपने को इस पे 5% provision maintain करना था. तो 40,000 का 5% 2,000 होता जिसमें already हम 800 maintain करे तो और 1,200 minus करना है. And that 1,200 will be subtracted from 39,200. So debtors will be shown as trade debtors 39,200 minus provision for bad debts 1,200. The final amount will be 38,000. 200 minus 200 0. 39 minus 1 38,000. Then we have stock 31,000. इसमें कुछ भी adjustment नहीं था तो जैसा है वैसा बताएंगे. बैलेंस शीट में stock 31,000. Then इसके बाद we have furniture 35,000. इस पे भी कुछ adjustment दिया हुआ नहीं है तो ये भी जैसा है वैसा बताएंगे. फर्नीचर 35,000 तो इसको भी हम बैलेंस शीट में वैसे ही बताएंगे. फर्नीचर 35,000. देन बिल्डिंग्स इट वाज 45,000 जिसको अपन 50,000 करना है. 45 में 5,000 अप्रिसिएशन करके हम बैलेंस शीट में बता देंगे 45 प्लस 5 50,000. नाउ वी नीड टू बैलेंस दी बैलेंस शीट. मतलब बैलेंस शीट का टोटल करना है. $60 plus 60, $120, $120 plus 40, $160, $160 plus 20, $180, $180 plus 10, $180 plus 20, $2 lakhs, $2 lakhs plus 10, $2 lakhs 10,000, $2 lakhs 15,000, 60 plus 60, $120, $120 plus 40, $160, $180, $190, $210, $210 plus 5,
215, 220, 221, 221, 800. The total on liability side is 2,21,800. Now let us balance the total on asset side. 50 plus 30, 80. 80 plus 30, 110. 110 plus 30, 140. 150, 2 lakhs. 2 lakhs, 2 lakhs 7,000. 2 lakhs 15,000, 2 lakhs 16,000, 2 lakh 21,000, 2 lakh 21,800. The total on both the sides of liability side and asset side of the balance sheet is 2 lakh 21,800 rupees. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.